In the previous session, we have discussed one of the scalar functions is mathematical functions. In this session, we will discuss another type of scalar function, that is text functions. Next, which we have to cover, these are text functions. Text functions means the functions which you have to apply on strings. स्ट्रिंग्स पर जो फंक्शंस हम अप्लाई करेंगे, ऑल द मैथमेटिकल फंक्शंस वी हैव अप्लाइड ऑन नंबर्स. नाउ वी विल यूज स्ट्रिंग्स फॉर अप्लाइंग ऑल these functions. ठीक, the functions which we will apply on strings is known as text functions, or you can say string functions. So again we will write the syntaxes of functions. One by one with one example. Okay, so first function is select upper. In this case you have to pass a string as a parameter. So suppose the string is this one, Python. This one is the string. After that put semicolon. So what this function will do, it will return a new string having all the characters in uppercase. So what we have supplied, Python in small letters, only P was in capital. So but this function has returned all the characters in uppercase. And one another synonym of uppercase function is ucase. Means instead of upper you can also use ucase function for changing all the characters in uppercase. So the working of both the functions are same. Now okay, similarly you can convert your string into lowercase also. So for that lower function is there, and if you pass this type of string in which the characters are in uppercase, Python, so it will convert it into lowercase and then return. Okay, so just like lower upper there is a synonym ucase, there is also a synonym for lower. Synonym means another name for the same function. So for that there is lcase function, then enter, working is same. Syntaxes. So यही मैंने स्लैश करके लिखा है, यही मैं लिख रही हूँ स्लैश करके, that instead of lower you can also use lcase, and here you have to pass a string. You can pass any string. Okay, so what this function will return, it will return a new string after converting all the characters in lowercase. Okay, so third function. Okay, third function is a substring. Substring function. Okay, so it means it will return a substring from a given string. If you pass any string, then according to the numbers और syntax it will return you a substring. कोई ना string is Python, same ही string ली है Python. After that if I pass a value 3, so what is the meaning of this 3? It means it will return a substring starting from a position 3. अब 3 जो है वो पोजीशन है कि उस पोजीशन से आपको स्टार्ट होना है और बाकी के आगे की सारी जो भी कैरेक्टर्स होंगे
वो रिटर्न होंगे. So when you press enter, so what substring will be returned? THON. Why? Because at the third position there is a 3. P is at first position, Y is at second position, at third position there is a T, and from starting from T you will return you will get all the characters. The substring returned by this function is THON. Similarly, if you pass another third parameter, means instead of THON just you need the 2 characters, so you will give a number 2. So what is the third parameter? Number, which will give you the information about how many characters will be returned. Okay, so finally what will be the output of this? Start from 3, थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करिए और सिर्फ 2 कैरेक्टर्स को ही रिटर्न करना है. सो फाइनल आंसर शुड बी TH. So basically in substring function you have to pass 3 parameters. First parameter will be the string from which you will get the substring. Second parameter will give you the position from which you have to start. Third parameter is the length of the characters which will be returned in a substring. Third one, first parameter is the string from which you will get your substring. Second parameter is the position from which you have to start. So you can also write from position. From कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट आप पोजीशन भी दे सकते हैं. इट डिपेंड ऑन यू. ओके. For length, this is the third parameter. It means how many characters will be returned in your substring. So finally it will return a substring from a given string. Starting from a position. स्टार्ट किसी ना किसी पोजीशन से होगा और उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चाहिए यू कैन पास इट इन थर्ड पैरामीटर. ओके, वेरी गुड. सो इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रिंग द अनदर सिनोनिम फॉर दिस इज दिस वन, SUB and STR. मीन्स इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रिंग यू कैन ऑल्सो राइट SUB STR. अगर आप इसको फंक्शन को रन करेंगे तो सेम आउटपुट वही सेम रिटर्न होगा TH. ओके, एंड देर इज वन मोर सिनोनिम फॉर दिस. इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो राइट MID भी आप लिख सकते हैं. तो ये तीनों की वर्किंग सेम है. तो आई एम गोइंग टू राइट हियर after that the next function, write select, and the next function is length function. Length function you are using from starting. What this length function will do? Pass a string. So just pass the same string Python. So what this function will do? It will return the total number of characters present in a string. So it is returning 6. One is left. So what this left function will do? Left is written, okay, and in this case also you need to pass the 2 parameters. Suppose you will pass number 2. So see the output. So start from left hand side and just count 2 number of characters and it will return the 2 number of characters. अब पाइथन स्ट्रिंग आपने पास की है, इसमें आपने फिर कॉमा देने के बाद 2 दिया है. इसका मतलब ये है कि आप पाइथन को लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, मतलब रीडिंग करना स्टार्ट करिए और स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड विल बी रिटर्न. सो दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग P1.
if you change the number to 3, so start from left hand side and then 3 characters will be returned, so it will return pyt. So just like left function, there is a right function, means in this case you have to start from right hand side and then the numbers will be returned. So from right, if 3 is written, means start from right hand side, 3 characters will be returned, so that's why it is returning HON. तो राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट करिए और वहाँ से आपके 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो रिटर्न होंगे. सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट फंक्शंस. और भी काफ़ी सारे टेक्स्ट फंक्शंस हैं, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. इसका लिख लेते हैं. सो सिंटेक्स फॉर लेफ्ट फंक्शन एंड राइट फंक्शन. In this case you have to pass the 2 parameters. One will be the string and second parameter will be length of your substring, means total number of characters जो भी होंगे वो कितने होंगे. So it will return a substring starting from a position, starting from left hand side. just इसमें चेंज ये है that left hand side से आपको स्टार्ट करना है. और राइट के केस में जस्ट राइट हैंड साइड से आपको स्टार्ट करना है. ओके.